We are back from the break and now we will be moving on to the extracurriculars जो मिस नूरुल खत्री ने यहाँ आज अब तक अपने ज़ैबिस के सफ़र में जिनका वो हिस्सा रही हैं और उन्होंने पार्ट लिया. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीइंग अ बायोसाइंस स्टूडेंट, अ बायोटेक स्टूडेंट, आपको टाइम कैसे मिलता है कि आप इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को साथ में मैनेज कर सकें? बिकॉज माशाल्लाह वी ऑल नो कि यू हैव अ वेरी नाइस जीपीए, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन द मेकिंग. तो उसको भी साथ चलाना एंड देन डूइंग द एक्स्ट्रा करिकुलर्स एज वेल, हाउ डू यू मैनेज दैट? All right, I get this asked a lot. ठीक है, sometimes when I tell people कि अच्छा मैं ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, और मैं पढ़ती भी हूँ साथ में, तो they are also like ये सब आप कैसे कर लेती हैं? I'm not a believer of sticking to just one thing. अगर अच्छा आप यूनिवर्सिटी आते हैं, बेशक आप पढ़ाई के लिए आते हैं, but then you can just not exhaust yourself after 3 hours of lecture. उसके अलावा आई फील लाइक दैट यू नीड सम फिजिकल एक्टिविटी एंड सम मेंटल एक्टिविटी बिसाइड्स जस्ट योर स्टडीज. सिर्फ पढ़ाई नहीं होती आपकी ज़िंदगी में, होनी चाहिए भी नहीं. बचपन से लेके अब तक मैं किसी न किसी चीज़ का पार्ट रहती रही हूँ, चाहे वो कोई वॉलंटियर वर्क ना हो जाए या तो फिर कोई डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, ओलम्पियाड्स हो गए, तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट. व्हेन आई केम टू ज़ैबिस मुझे पता चला था यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं हर यूनिवर्सिटी में. सो आई न्यू कि ज़ैबिस में सोसाइटीज़ भी होती हैं. देन ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बिन वेरी स्पोर्टी, तो अच्छा स्पोर्ट्स भी होते हैं. ज़ैबिस इतना बड़ा नाम है, उनकी स्पोर्ट्स टीम तो होंगी. उसके अलावा अच्छा हाँ यार काउंसिल भी होती है, तो मतलब काउंसिल में भी जाना है. उसके अलावा मतलब वट एवर चांस दैट यू गेट. मैंने डिबेट कंपटीशन HEC में भी ज़ैबिस को रिप्रेजेंट किया है इन द डिबेट कंपटीशन लास्ट ईयर. तो ये सारा मुझे नहीं पता, खुद हो जाता है. आई थिंक जस्ट जब इंसान को शौक़ होता है ना, या जब उसे कुछ करना होता है तो वो कर लेता है. तो आई हैव बिन पार्ट ऑफ द ज़ैबिस बायोसाइंसेस सोसाइटी इनिशियली. आई सर्व्ड 1 tenure एज अ डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. उसके अलावा आई एम प्लेइंग इन द ज़ैबिस ऑफिशियल वॉलीबॉल टीम, और हम कल ही एक भेड़िया यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट टूर्नामेंट जीत के आए हैं. वी डिफीटेड देम इन देयर होम ग्राउंड. उसके अलावा आई हैव बिन पार्ट ऑफ द ज़ैबिस स्टूडेंट काउंसिल फॉर 1 whole year एज एन एक्सटर्नल आउटरीच रिप्रेजेंटेटिव एंड देन लेटर अपग्रेडेड टू द कोऑर्डिनेशन लीड. उसके बाद आई ज्वाइंड ज़ैब FM. ठीक है, so you know that. We won't be talking about that. अच्छा, let's do one thing. We'll break it down into parts. All of the extracurricular activities. सबसे पहले मुझे ये बताएं कि because Biosciences Society was the very first extracurricular. अच्छा, वैसे भी लिस्ट खत्म नहीं हुई थी, but we'll get to it. We'll get to it. Yes, I know वो लिस्ट खत्म नहीं हुई थी. But when you started Biosciences Society, तब मेरे ख्याल में COVID का सीन हो गया था. So how did the society and how did you guys, all of the members, what did you guys plan? How did you manage the meetings? आप लोगों ने अपने इवेंट्स का क्या किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. अच्छा, सबसे पहले जब मैं ज़ैबिस में आई ना, तो माई मॉम वाज ऑलरेडी टायर्ड ऑफ मी बीइंग एवरीवेयर. तो कहती है मुझे, फर्स्ट सेमेस्टर यू जस्ट गोना स्टडी, इफ यू ब्रिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आउट ऑफ यू, you're free to do whatever you want to do. Okay. I won't stop you. मैंने कहा चलो सही है, sounds like a deal. तो in the first semester I was not a part of any activity. I mean, now that I think of it, it's kind of unbelievable. ऐसे कैसे मैंने एक सेमेस्टर सिर्फ पढ़ाई में गुजार दिया. But then what happened, I got a nice GPA, my mom was happy, everybody was satisfied. They're like, okay, now I'm going to join a society. Now which society to join? ठीक है ना, इतनी societies थी, but I was like, I'm exploring, let's stick to my domain. I'll have majority of my seniors, they'll guide me through the academic process as well and how everything functions at ज़ैबिस as well. So yeah, I am. Thank you. But so I joined the ज़ैबिस Biosciences Society. उस time COVID आ चुका था, तो everything would have shifted online. I filled the form online, Google Docs पे. उसके बाद we had an online interview on Google Meet, and then I applied for the Director Research and Development, and I got selected as the Director Research and Development, and that is where my journey began. As Director Research and Development, my job and my key responsibilities वो ये थी कि भाई सोसाइटी को जो है ना फंक्शन करते रहना है. सबसे पहली चीज़ तो ये यू हैव टू कम अप विद आइडियाज़ एंड आइडियाज़ फॉर एग्जीक्यूशन, कि हाँ भाई ये कैसे होगा. बिकॉज ऑनलाइन वॉज वेरी न्यू टू एवरीबडी. मतलब आज से पहले हमने, मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा पैंडमिक, एटलीस्ट नॉट इन माई लाइफ, जो हमने एक्सपीरियंस किया हो, और इन द लाइफ ऑफ द पीपल जो वर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल चैलेंजिंग, क्या एक्टिविटीज़ प्लान करें. सो वी हैड अरेंज्ड अ बंच ऑफ सेशंस. फर्स्ट थिंग, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. ठीक है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स के हिसाब से.
वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स दैट वी डिड कि हमारा कोई भी डे आता था ना, जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, तो हम क्या करते थे, द होल सोसाइटी यूज टू वॉलंटियर एंड मेक शॉर्ट क्लिप्स और फिर हम उसकी वीडियोस पोस्ट करते थे. तो दैट वाज वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग थिंग्स दैट आई गॉट टू डू यू नो एज पार्ट ऑफ द बायोसाइंसेस सोसाइटी. मोर ओवर वो आइडियाज़ फॉर द वीडियोज़ दैट यू नो मेरे डिपार्टमेंट का काम होता था. So I was pitching in, my assistant director was pitching in, the members were pitching in, and of course all the people in the society and other departments were pitching in. So Then we were like कि हमें कुछ और भी करना है, तो we started a series of podcast. तो हमने different fields से लोगों को interview किया. Let's see. So you know whenever we think of corona हमें लगता है कि doctors or the public health people or the biotechnologists were the people that contributed. But you know there were so many other professions that were contributing to how the world could be a better place in the pandemic. So we tried to highlight those, how teachers played a part, how engineers played a part, even how photographers and videographers and bloggers played a part in you know making coronavirus and the whole pandemic and the lockdown bearable for us. So that was a unique idea that no other society was doing at that time. It was very appreciated by all the authorities as well. So as a freshie, मतलब for starters, आते ही you were the director of a Yes. society. So do you think on a scale of 1 to 10, what would you rate your tenure, the whole tenure of the Biosciences Society? So I'll tell you, we were the best society of the year. ठीक है, and you know I won't go to a 10. Obviously there's always room for improvement. New था, I'll rate like a 9 or 9.5 because everything was appreciated. We came up with ideas and we were the society that held the most number of events in the year, and we were the most successful you know batch of the Biosciences Society ever because you know Biosciences Society ने कभी भी best society का title जीता नहीं था. Obviously the domain for some people is a little boring. ठीक है, उनको लगता है अच्छा यार यहाँ भी पढ़ाई करो, यहाँ भी पढ़ाई करो, but you know we tried to make it interesting as we could. So we left behind the Lions Club, the Performing Arts Society. So that was an achievement for all of us. It was a collective team effort. ठीक है ना, we had a great excellent team of individuals. So we did that. This is about coming on to the more activities. One of the things, the most hit event of our Biosciences Society was a brain battle. Now brain battle was a quiz competition and we held it online. अब आप online quiz competition कैसे कर सकते हैं ना? I mean there's always People can cheat, ना? Exactly. So we decided to hold it on Kahoot. Kahoot is a website where you have questions on the presenter's screen and you only have the answer options. Okay. ठीक है, you have to select an option in a limited time and the one who does it first, the correct option, gets the highest point. And so you know we had different universities that participated. We even had an entry of a team from India as well, so that was you know reaching out on a global scale. Makes me so happy you know talking about all of that. You know I'll call that a golden time. मैं in ये वाला pandemic. सारा पार्ट एडिट आउट करने वाला हूँ क्योंकि अगर मेरी फैकल्टी को कहूट के बारे में पता चल गया तो हमारे तो सारे क्विज़ेस जाएंगे वहाँ पे. I'm just joking. Tell me, के do you think being a part of the Biosciences Society, it groomed you first of all? Secondly, was this the first step to the ladder के उसके बाद you climbed it up and did all the other extracurriculars जो भी हैं, be it volleyball, the student council, Zab FM and whatnot? Right. Do you think the credit goes to? Absolutely. I would actually like to mention one of the person I consider as my mentor, the president at that time, Ali Haider. He has been an exceptional support, you know, telling me all about how Zabis goes from, you know, कि कौन सा teacher कैसा है to how you can approach them or who can help you out to the Zabis politics. So everything he taught me step by step, you know. I mean, I was willing to learn. So he taught me all of that. He actually, you know, he just exposed me to all of that. Okay. You know, you can't really feed in all of this to somebody, but you can expose them and you can, you know, tell them कि अच्छा भाई ऐसा होता है, so you can have an approach like this. So Let them grow on their own. Exactly. So he really helped me in my growth. For volleyball, I had joined the volleyball team right after my first semester. क्योंकि ना sport तो मुझे करना था, society भी मुझे करनी थी. So these were the two things that I had taken up. I was not very full. I still had room, but you know I kept myself to like stick on that. Even though हमारी कोरोना में कोई practices नहीं हो पाई, so I wouldn't say कि I was part of the team, but you know I had signed up.
ठीक है, तो दिस वाज इट. एंड फिर उसके बाद एज यू टॉक अबाउट क्लाइंबिंग द लैडर, तो अली हैदर ओनली इंसिस्टेड मी एंड एक्चुअली आस्क्ड मी टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव for the biosciences council? and biotechnology Okay. program in the student council. तो हर program के program representatives होते हैं. They act like a liaison between the faculty and the student and the council as well, and other student bodies that are governing in Zabist. तो ये था, and I applied there. तो now that's also a very dramatic kind of a journey, because one of my very close friends as well applied for it. अब बायोसाइंसेस का प्रोग्राम जो है वो रिलेटिवली न्यू है, ठीक है. ओके. बायोसाइंसेस का प्रोग्राम, उसके जो कितने 4 बैचेस ग्रेजुएट होंगे, और बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जो है वो बस अभी ग्रेजुएट हुआ. तो यू हैव अ सर्टेन लिमिट कि अच्छा अगर आपके पास इतने लोग हैं प्रोग्राम में तो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, इतने लोग हैं तो फिर 2 रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, एंड दैट नंबर कीप्स चेंजिंग एवरी ईयर. तो आई वुडंट गो इनटू द स्टैटिस्टिक्स. तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स वर अप्लाइंग, उसके अलावा 3 अदर कैंडिडेट्स वर अप्लाइंग. ओके. एंड दैट हैड बीन ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि भाई बच्चे इतने नहीं हैं जितने कैंडिडेट्स खड़े होके आ गए. तो दैट वाज अ वेरी ड्रामेटिक इलेक्शन. Unfortunately, I did not win that election, but I still, the president of the Zabist Student Council himself was, कि नहीं, you have a lot of potential, you should apply into the council. You can come as a general body member and your growth doesn't stop here, you can still learn and grow over there. So that is how I ended up in the Zabist Student Council. Obviously, I cleared my test and an interview. कोई ये ना समझे कि भाई मैं ऐसे आ गई थी. But that's so how it went. That was the first defeat you could say you faced after you joined Zabist, na? Because you had good grades, mashallah. You became the director of the first society you joined. You were a part of volleyball team. So this was the first defeat that you had to face. Yeah, when you were joining the council. You can say that was the first defeat, but that actually opened door to like so many new things, because अगर तो मैं election में नहीं हारती, ठीक है ना, let's say I wouldn't have been what I am now. Obviously. The PR I built throughout. उसके अलावा I got a chance to introduce myself to people and actually be of their help, despite the fact whether I was the program representative or not. But yeah, it was a defeat. So Shahzeb Faisal at that time told you कि हाँ नहीं तुम आओ council में, yes, join it. He motivated me a lot, and he told me कि भाई this is not the end of the world, because I had tears in my eyes. But that's how it went, and I'm glad that I joined the council, because it was a whole hell of a ride. Okay, so council is a huge topic. Yes. इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, because obviously it's a student body, it's student government. तो उसमें पॉलिटिक्स भी आएंगी, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे इवेंट्स आप लोगों ने करवाएंगे, उसके ऊपर हम बात करते हैं. बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक.